Good morning. Welcome to our third week of Unified. So, welcome at 7 o'clock sharp. And today is all about learning. Today is all about growing spiritually. It's something which is a gift to ourselves. And in my opinion, this is the best book ever. So, in the first week, we talked about centering in our heart. Those of us who probably are logging in the first time. The sessions are available on YouTube. So, if you're part of the WhatsApp group, you have links for that. And unfortunately, our old YouTube channel is not yet restored. So, we've put a new one so that you can be just on it and understand this book. And for those of you who are not able to read every day, listen to the session every day because it's important for you to understand that this 20 minutes a day is very important for us to reflect. जो हम Sunday को पढ़ रहे हैं, we have to imbibe that in the other 6 days. Read the chapter if possible. If you can't read the chapter, hear the chapter. You have the sessions for you. Second week, we talked about recognizing our higher self's name. And for this, it was very easy. It was very tough if we've done that diligently.
दिवाली की वीक में आया था, सो लास्ट वीक हमने रिपीट किया सेकंड वीक, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द सेकंड वीक, जहाँ आप अपने हायर सेल्फ का नाम आपको मालूम पड़े. So you can let me know in the chat box, which I'll see later, that how many of you got the second, your higher self's name, and how many of you didn't. We can even have a reflection session. That's absolutely okay. But this journey is not like a regular book. कि आपने अगर आज नहीं अटेंड किया तो आप कल अटेंड कर लोगे. It's okay. This is a course. So this means 6 months of commitment. It doesn't mean you're going to come on, off, and you'll catch up. ठीक है, कभी आप संडे सेशन में लाइव नहीं आ पा रहे, एटलीस्ट डू योर सेशन ऑफलाइन. Very important to understand that bit. Anyways, I'm today going to take you to the third week, communicating with safeguards. Very important for us to understand on this Soulful Sunday that हमारी आत्मा जो हमारी बॉडी के अंदर आती है, ऐसे ही हजारों लाखों करोड़ों आत्माएं हैं everywhere, इंसानों के रूप में and those who've crossed over. So very important to have safeguards. जब आप safe हैं communication के लिए कि okay, this is how I am. ज़्यादा समझ में आएगा जब हम chapter पढ़ लेंगे. So I'll explain the chapter to you as we do our journey. Third week of the book Unified, channeled by Roger Lanphier, and a book by Mahavatar Babaji, helping us realize our spiritual being, our spiritual journey. So let's understand this. Communicating with safeguards. Now you have experienced your higher self on an intimate level. You have communicated consciously. For years, we can be unaware of a clock ticking in a room. Then suddenly we hear it. It is so loud, we can't imagine we never heard it. That is now your experience with your higher self. It has always been a part of you, helping you, directing you, guiding you, nudging you, prodding you. Yet you did not hear it. Now you do. You know the voice is there. All you now need to do is focus your attention on it. Soon you will start focusing your attention on its messages, but first you must develop some safeguards. So those of you who've had a connection with your higher self and you know a name, congratulations, because now you know that there is a name and there is something. But today is the biggest chapter for you to validate your knowledge of last week. अब आप safeguard के साथ communicate करने वाले हैं. What are safeguards? You'll understand them in the next few minutes. The first safeguard deals with the uninvited influences. Since we are all connected, it is possible for other people to influence your thoughts. These people may or may not be living in the physical world we know. So understand this very clearly, that people who are going to influence us do not have to be physically present next to us or in our life. They can be anywhere and everywhere, okay? So we need to understand that very clearly, that some other people also influence us. They may be part of the vast spiritual world around us. We don't yet perceive. हमें पता ही नहीं उसके बारे में, but it's there. Nevertheless, they are there, and some of them invade our aura, our field of energy, and influence our thoughts. The thoughts these uninvited influences feed us can be helpful or harmful, right or wrong, negative or positive, fearful or cheerful, and even ingenious. You can never be sure if they're appropriate. Only the thoughts that come from your higher self are reliable. Unfortunately, most of us can't tell the difference yet between the thoughts of the uninvited influences and our higher self. हमें पता ही नहीं कि क्या thoughts हमारे higher self दे रहे हैं हमें, या क्या thoughts हमें कोई और के influences दे रहे हैं. So let's understand. Since we are masters of our own selves, the remedy is quite easy. You simply close your aura to all except your higher self. This is the first important lesson this week. So, एक बात समझ लीजिए, हमारा aura है. I don't know how many of you know. कभी आपने देखा हो तो there are 7 realms of aura. आपने देखा होगा इंसान की body के पास 7 दिखते हैं. जो aura readers होते हैं वो आप aura पहचान पाते हैं कि किस wavelength में आप जा रहे हैं.
आपका ऑरा आपका इंडिविजुअल ऑरा है, लेकिन कई बार जब आप नेगेटिविटी फेस करते हैं उस ऑरा में कोई बाहर का इन्फ्लुएंस आ चुका होता है. सो अब से जब भी हम क्राउड में जाएंगे, लोगों के साथ जाएंगे, बहुत सारे लोगों के साथ, वी विल से वन सिंपल लाइन, I close my aura to all except my higher self. जब आपका ऑरा सिर्फ बंद हो जाएगा और सिर्फ आपके हायर सेल्फ से रहेगा, तो आपका कम्युनिकेशन कनेक्शन विल बी रियली स्ट्रॉन्ग. Say it also whenever you are in a negative atmosphere, such as around sickness, accident, troubled person. कभी भी हॉस्पिटल जा रहे हैं या किसी के शोक में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं जहां नेगेटिविटी होती है, वहां पर भी अपना ऑरा क्लोज कर लीजिए, एक्सेप्ट फ्रॉम योर हायर सेल्फ. This week, you can't say the words to close your aura too often. अभी आप स्टार्ट करें तो not too much right now, gradually ज़्यादा बोलेंगे. After this week's practice, the times when you need to close your aura will be clear. It will be almost second nature. बाद में ना आपको आदत पड़ जाएगी, अरे let me close my aura, अरे let me do this, अपने आप से पता चल जाएगा. Now, in spite of all your precautions, some uninvited influences can get into your aura and feel quite at home. These are usually people who have died and who are confused, troubled, and hurting. Their awareness of the true nature is so distorted that they have refused the help, gladly waiting at their side. When you have such an uninvited influence in your aura, you can feel moody, irritable, exhausted, pained, angry, or any other emotion and feeling that is inappropriate. So, डराने की बात नहीं है, बट समझने की बात है कि जब हमारा, देखिए, all of us are born with love and light. हम पैदा हुए हैं, ऊपर वाले ने हमको यहाँ बर्थ में भेजा है with a lot of love, with a lot of light. लेकिन हम लाइट में कुछ देख क्यों नहीं पाते, कुछ ले क्यों नहीं पाते, बिकॉज हमें लगता है कि अरे ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है. उससे लैक ऑफ लव आता है और उससे परेशानी, झुंझलाहट, whatever, irritation, so many emotions are coming up. But जब आपके मन में ये सब विचार आ रहे हैं और you're feeling those emotions, it's because not of you, it's because of uninvited influences in your aura. Somebody with their negative energies entered your aura. अभी somebody कौन है? Living beings नहीं है. अब आप बोलोगे, for example, I'm with Mr. A and B. Now उनका टेम्पर खराब है तो मेरा टेम्पर खराब हो रहा है. Yes, that's possible, but 90% time आपने उस समय अपना aura break किया है because you're feeling negative, because you've not blocked it, you've not sealed it. कोई नेगेटिव इंसान जो चला गया है, जिसकी इनकम्प्लीट डेथ हुई है, फ्रस्ट्रेशन से, एक्सीडेंट से, बीमारी से, या जो परेशान था, जो चला गया है, वो आपकी ऑरा में अटैच कर रहा है अपने आप को और आपको उसके इमोशंस फील कर रहे हो. आप मूडी हो रहे हो, इरिटेबल हो रहे हो, एग्जॉस्टेड हो रहे हो. सो इनको निकालने के लिए हम अपना क्या करते हैं, पहले तो ये आए नहीं, इसके लिए हम ऑरा को ब्लॉक कर देते हैं. आगे हमको हटाने के लिए भी एक मंत्र आएगा, वी विल रीड दैट, अंडरस्टैंड दैट आल्सो. Now, these negative influences have come and gone most of your life. The best news is बचपन से जब 3-4 साल से हम बड़े हो जाते हैं, we become conscious, ये auras हमारे पास आते ही रहते हैं. ये हमारी इन्फ्लुएंस करते हैं थिंकिंग को एंड हमारे एक्शंस को for ages. Well, those influences are now going to stop. They must stop if you are to experience your higher self clearly. They must stop if your new life of happiness and abundance is to flow easily and effortlessly. So अगर आपको abundance चाहिए, happiness चाहिए, excitement चाहिए, joy चाहिए, so all these negative influences have to stop. कौन stop करेगा? Only you can stop. Only you can stop them. Nobody else can stop them. Now, to clear your aura of any uninvited influences, you begin each of the daily quiet periods from now on with a few simple words. These words are to be memorized. At first, you can read the book, the words, but be able to say them later with your memory by the end of the week. आप आराम से कर पाएंगे, Latin Greek नहीं है. Words का essence समझ लीजिए. You don't have to repeat the words like a parrot. Understand the essence and you can make them in your own way also. It's absolutely okay. To all uninvited influences in my aura, I send love and light. You're each whole and healed. You're each created
as love and light, and you are still love and light. You each feel no pain now, and you're not afraid. You each have a perfect place to go, and I ask my higher self, जो भी उसका नाम last week आया हो, to take you there now. Each of you go in peace. अगर आप 1% अपने हायर सेल्फ से नहीं मिले हैं, आपको नाम नहीं मालूम पड़ा है, तो आप जेनरिक बोल सकते हैं हायर सेल्फ का भी. ये आपको मैं मेडिटेशन में करवा भी दूंगी, सो आपको एक समझ में भी आ जाएगा कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट. बट इतना समझ लीजिए, ऑल ऑफ अस ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न विद लव एंड लाइट. भगवान हमें बहुत सारा लव देके भेजते हैं, अनकंडीशनल लव एंड लाइट की, सब कुछ क्लियरली दिखे हमें. हम सारे होल एंड हील्ड पैदा होते हैं, और हम यही दुआ दे रहे हैं उन अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस को कि आप भी इस दुनिया में आए थे, लव एंड लाइट थे, आप लव एंड लाइट थे, हो और रहोगे, एंड आप सब होल थे, हील्ड थे. बिकॉज वो परेशान हो रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं यू आर हील्ड नाउ, कि परेशान थे आप बट नाउ यू आर हील्ड. एंड आपको अब कोई दुख नहीं हो रहा, अब आपको डर नहीं लग रहा, बिकॉज अब आप ऊपर पहुंच चुके हो इन डिफरेंट रेल्म, एंड आपके पास एक परफेक्ट प्लेस है जाने के लिए. कई लोग इसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलते हैं होम, कमिंग होम, विच मीन्स कि आत्मा से परमात्मा से, ऊपर वाले से मिलना चाह रहे हैं. वी आर गोइंग टू मर्ज विद द लाइट, सो दैट इज आल्सो समथिंग वेरी सेफ. तो उस घर में, वहां भगवान के घर में आपको जाना है, आप भटक रहे हो, सो आपके पास वो जगह है जाने की, और आपको रास्ता नहीं पता, तो मेरी हायर सेल्फ जो मेरे अंदर रहती है वो आपको दिखा देगी रास्ता. इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी हायर सेल्फ आपसे अलग हो जाएगी तो आपके अंदर आत्मा नहीं होगी. इट्स वेरी पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट. वो आराम से गाइड कर देगी जहां भी जाना है. सो एंड में हमको दुआ देते हैं that each one of you go in peace. There is another safeguard to learn this week. ये एक safeguard तो हमने क्या किया था, I close my aura to all except my higher self. ये हमने किया था, right? अब एक हमने एक मंत्र चैंट किया था कि हमारे क्वाइट पीरियड्स में हम ये बोलेंगे सो दैट हम सिक्योर्ड हो जाए, जो भी हमारे अंदर आने वाली इन्फ्लुएंस है वो भी चला जाए बाहर, राइट? अब एक और सेफगार्ड हम जो सीख रहे हैं इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें अपने हायर सेल्फ से एक सिग्नल चाहिए कि हम समझ पाए कि हायर सेल्फ कम्युनिकेट कर रहा है हमारे साथ, या कोई और, मतलब anybody who is not our higher self. So let's understand. जब हम अपना ऑरा क्लियर कर लेते हैं, हम अनवाइल्ड इन्फ्लुएंसेस को भेज देते हैं, हम सेटल डाउन कर जाते हैं विद लव. माय डियर हायर सेल्फ, जो भी उसका नाम है, अगर नाम नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा. प्लीज गिव मी अ सिग्नल नाउ. मैं अभी मेडिटेट जब करवाऊंगी तो आप में से कई लोगों को सिग्नल मिल जाएगा. इसको रिपीट कर लीजिएगा यूट्यूब पे जब अपलोड हो जाएगा, या जो कोई वॉइस रिकॉर्ड करेगा तो वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिएगा मेडिटेशन. एनीबडी हु कैन रिकॉर्ड, प्लीज रिकॉर्ड एंड शेयर ऑन द ग्रुप. Wait for some physical signal that is obvious. It can be a movement of the head or of the upper body or of the finger, arm, leg. Therefore, it is important to be sitting so that the entire body is free to move. It might be a movement you're used to, just fluttering eyelids. It can be complete sensation someplace, a gentle caress, heat, tingling. It could be a vision, either a clear picture or simply light. कुछ भी हो सकता है. ये सिग्नल क्या है कि आपका आपके अपने हायर सेल्फ से एक कनेक्शन है. ये कुछ भी हो सकता है. इसके लिए आपको आराम से बैठना होगा, कंफर्टेबली रिलैक्स्ड. कुछ फड़कन धड़कन कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग कैन हैपन. आज आप लोग को मालूम पड़ेगा, मैं अपना एग्जाम्पल भी बता दूंगी उस समय. देयर आर टू सर्टेनिटीज. द सिग्नल विल बी प्लेजेंट. आपको दर्द नहीं देगा सिग्नल. इट विल जस्ट बी अ सेंसेशन इन योर बॉडी. And the signal must be given to you when you ask for it. हमेशा नहीं होता. आपको पूछना पड़ेगा अपनी बॉडी से कि yes, I'm ready for it. Is this the signal from my higher self? So उसके लिए हमको ready रहना पड़ेगा. Get that very, very clearly. That signal is very important. It is a signal that you're unified with your higher self and that you are not actually communicating with the higher self or with uninvited influences. So अगर आपको कोई सिग्नल आ रहा है तो आपको पता है कि मेरे हायर सेल्फ से आ रहा है, बिकॉज मेरे हायर सेल्फ से मैंने पूछ लिया कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो क्या मेरे साथ, और वो वाला आपको फीलिंग एक्शन आ जाएगा. सो आपको पता है कि ओके, नाउ दिस इज फाइन. आपके जो क्वाइट पीरियड्स होंगे इस हफ्ते,
You will be devoting your quiet periods this week to discover the signal and then simply enjoying the experience of love along with the signal. Feel comfortable with the signal and notice how it comes so easily once you've settled into quietness. This week, when you go to bed, practice the words to clear your aura of uninvited influences. Then 3 of the nights this week, unify yourself with God, and that is, think of whatever qualities of God comes to you and give yourself those qualities as well. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि गॉड के पास बहुत सारी क्वालिटीज हैं, हमने उन सब क्वालिटीज को अपनी लाइफ में इम्बाइब किया था, राइट? और हमने कहा था कि गॉड ने हमको, गॉड में है, मुझ में है, एंड दिस इज, मैं उनकी इमेज में बना हूं, सो मुझ में भी वो वर्च्यू है. सो ये तो हमें रोज करना था, सेंटरिंग ऑफ आवर हार्ट करना था, जहां हम गॉड की क्वालिटीज अपने हार्ट में इंटरट्वाइन करते हैं. तो आज हमें बोला जा रहा है कि 3 हफ्ते हमें यूनिफाई करना है गॉड के साथ, और उनकी जो भी क्वालिटीज हैं उनको हमको अपने अंदर ज्वाइन करना है. बची 4 आते हैं हमारी. एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है लास्ट वीक की. कौन सी एक्सरसाइज थी? जहां हम अपने हायर सेल्फ का नाम करते हैं. सो वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद दैट. Understand this very clearly, and then we are going to be giving a few words of thanks to our higher self for its guidance and its love. And we're going to transmit our love energy to whomever we choose. During the day this week, you can continue to send love to anyone or anything whenever it occurs to you. So now all of us are going to become channels of love. जिसको भी, जहां पर भी जाने को, अनजाने को, इवेंट को, सर्कमस्टेंस को, give love, give love, give love. Remember, the more you give, the more you get. So when an open channel of love, जब आपको love से पैदा किया है, तो जितना देते रहोगे उतना बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं. So get this very clear. It's a practice we should all develop. For as you give, so shall you receive. Give out love in your thoughts. Don't be surprised when it comes back to you in the least expected way. बहुत सारे तरीके से आपके सामने love आने वाला है. So be ready, open and receptive for all that is coming your way. So any questions so far? If any questions, please feel free to ask. Otherwise, I'm going to meditate and it will become clearer. So just understand one thing. There are a couple of things that we are talking about. पहला हमने centering of heart किया था, मैं उसको भी आज intertwine करने वाली हूँ. Supriya, I can't see your face. You've asked to raise your hand, but I can't see your face. I need to have energy exchange to talk to you. I can't talk to a wallpaper. So I'm sorry. So you have to be raising your hand. Yes, Akshay. Hi, good morning, Prachiti. Good morning. I wanted to ask you regarding the signal that we want from our higher self. Is it that we need to close our eyes, go into a state of trance, and only then we have to ask for the signal? It will come anytime. लेकिन शुरू में we have to, अभी हमको पता नहीं ना सिग्नल क्या है, तो एक बार को तो आंखें बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि नहीं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. एक बार तो कंफर्टेबल होना पड़ेगा साइलेंस में. एनीवेज मैं डेमोन्स्ट्रेशन, आई विल मेक यू गाइस डू दिस राइट नाउ. सो यू विल प्रोबब्ली गेट सिग्नल. I feel 90% of you will get a signal right now. Only if you've met your higher self, अगर आप मिल चुके हैं, नाम आ चुका है, तो अब सिग्नल भी आपको आ जाएगा. Not yet. मेरा भी अच्छा नहीं आया. So have you practiced every day, Akshay? I tried practicing. Okay. If you tried, good. Doesn't matter, then don't name your higher self, just say higher self and thank you, जो भी हम करने वाले हैं. या मुझे सेशन के दौरान आया था, नाम भी, सिग्नल भी, while doing the first time. So it's not tough at all. हमें लगता है कि अरे बहुत साइलेंस में जाना पड़ेगा. नहीं, I had so many people logged in, तभी बीच में हुआ था. So it's not tough. Okay, apart from this, any question? No? Okay, good. All right, so let's just start the meditation, and then उसके बाद क्या आता है, क्या नहीं आता, let's go for it. Let's understand. Yes, Richa. Sorry, you have to unmute yourself. Yeah. I just want to ask, the quiet period will be in morning or in the night? Anytime. Anytime. Okay. Anytime, but you can be quiet. Okay. It's not by the clock. Okay. Thank you for asking. All right. So I want everyone right now, जो भी कुछ movement चल रही है body में, completely stop. Now you're meeting a spiritual world. It's not a normal meditation. Just stop. Shirt को tuck in करना है, jacket पहनना है, कुछ करना है. If you're wearing specs and all, please निकाल दीजिए.
If you're wearing rings and all, and agar aap comfortable in rings mein, to great. If you're not comfortable, nikal dijiye, whatever. Basically become light. Yeah. Just become light. If you're comfortable with specs, you can wear them. If you're not, just be comfortable. So let's close our eyes. Let's be seated. Our backs absolutely straight. No lazing on couches. Straight कर लीजिए back को. पाँव जमीन पर या आलती पालती मार के, however you're comfortable. Take a deep breath in. Fill yourselves with love. Unconditional love has entered you. Feel the love pulsating in every cell of your being. And as you exhale, feel being the channel of love, of sharing your love with the world. Take a deep breath in. Fill your lungs with light. Lots of light, bright, luminous light, radiating deep within you, making everything bright. And as you exhale, feel that you're sharing your light with the world, making it a brighter, better place to live in. Inhale in bliss. Everything is blissful because you are at peace, you're having joy, you're feeling abundant happiness, and you're a channel of love and light. And as you exhale this feeling, remember, we're all channels of blessings every time, everywhere. Take a deep breath in once more. And exhale. Watch your breath. I am made in the image of God. God is love, so I am love. God is light, so I am light. God is joy, so I am joy. God is happiness, so am I. God is abundance, and so am I. God is a blissful feeling. It's sheer bliss, and so am I. Let me feel centered in my heart by intertwining God's quality in me, because I am a part of Him. Feel the center of your heart getting more balanced, more aligned. I understand I am born on this earth in this beautiful body, which has been taken over only for a purpose of furthering my soul's purpose, my soul's journey. I have a name in this human life, but I also understand that my spirit, my Atma, my soul also has a name. And it's called my higher self. But it has a name also. I understand the name is generic. It could be anything that just comes up to me. And I have to practice that name, and it'll keep coming to me every other time because it'll be like a second skin. The way people know my name, similarly, I will know my soul's name, and even other people may. That is the power of my higher self's name. I also understand that when I am born on this earth, I am love and light. But as I grow up, because of society, because of the new learnings, sometimes I forget that I am love. And I start disrespecting things, hating things, or behaving differently because there is lack of love. Because there's lack of love, there's lack of light. So I'm not able to see the larger picture clearly. And my angle, my perspective becomes limited. So I lose walking on the track of love and light. And I understand that with this journey of unified, I'm going to be unifying back with my truer self, of meeting my higher self, of finding all that life has to offer, which is all about love and light.
I understand I'm in a deeper, deeper journey, a spiritual journey, where I am empowering myself as never before. And in this week of my learning, I now request my higher self to always guide me and to be with me as I learn to evolve a bit every day. Let's all now close our auras from all uninvited influences except our higher self. So let's tell our higher self, recline your head just a bit towards the heavens above, a little bit, and say after me, I close my aura to all uninvited influences except my higher self. And feel yourself being secured, safe, with just you and your higher self. And now it's time for us to send away all uninvited influences who may be there in our body, in our aura, because of whatever conditioning. Let's remember, not every soul is a happy soul. Souls also come with the baggage. If they're angry, they're frustrated, they're unhappy, they can get attached to us. We also have done that to somebody in some point of time when we were in a soul journey. So let's not judge them. Let's not get irritated. Let's accept them for what they are doing because we probably have done them. So it's coming to us as an experience in this life. So whenever we're irritable, judgy, moody, or whatever, let's understand that we have some uninvited influence in our body. And we are the ones who can send these influences away. Not very easily, but not very tough either. All we have to do is have a sankalp, have an intention. So let's address the uninvited influences. Again, you can look up a bit up if you want, or however. To all the uninvited influences in my aura, each of you is love and light. You were love and light. You are love and light, and you will always be love and light. You have a place to go to. You aren't realizing that each one of you is healed and whole, but you are whole and healed. You don't have to attach to anybody's aura, mine or anybody's, because you are complete in yourself. To all the uninvited influences, please leave my aura now, and I request you to go to your home. If you're not clear where the home is, I request my higher self to guide you, direct you, and escort you to go there. Be blessed. Be the love and light that you are. Be whole, be healed. I pray for you. We have safeguarded our energy, sent off all uninvited influences. We've locked our aura. We can lock it once again because now the uninvited influences have left. I safeguard myself with the next vow that I take. I block my aura. I close my aura to all uninvited influences except my higher self. And so it is. Dear higher self, I believe you have a name. I believe that my name and your name are in totality in harmony. I believe the name could be anything. But I am open and receptive to finding your name. So today I will try one more time. Dear higher self, what is your name? Please allow me the knowledge of your name.
I also know this name can unfold in front of me, either in a written way. Maybe I read it somewhere. Maybe I hear it like a whisper. Maybe I hear it loud. It can come to me in any form, any way. This name is something I could be familiar with or completely ignorant. Dear higher self, whether I know your name or not, I believe there is one safeguard, there is one communication with you, just to confirm with myself that am I hearing the message from you or from some uninvited influences? I will be open and receptive for that. I will be finding that movement in my body now that I'm completely relaxed. I believe it can be anything. Connect with me and guide me. What is that sensation? What is that expression which shows to me that I am communicating with you? I let my body loose and I await your signal, your guidance. So, are you present in my body? Allow me with a signal. Observe any movement in your body, any sensations. If any thoughts are coming in, just let them go. Ask yourselves that you're waiting for a signal that you are in connection with your higher self. And be ready to listen, to observe in silence that signal. Observe your body. Relax. There's no need to exert any pressure. Just relax. Simply observe any movement, any sensation. I know whatever signal I will get is something that I will always get whenever I ask you if you are guiding me. So, dear higher self, please give me the signal now so that I am comforted, whether I'm still connected with your name or not. Give me the signal now. If your body is moving, please make it straight. Don't move. If your eyes are open, close them. Observe the signal. And if you felt a sensation, any signal, repeat the same question internally or externally, however you want. Repeat for the signal, and if see the same signal is coming in the same place or a different place. This week, we keep practicing this to identify the signal by intertwining ourselves in a world of love, God's love, His virtues, His qualities. And if you're familiar with the name,
Then we straight away ask our higher self, addressing it with his name or her name. Dear higher self, there is so much to learn. And I know it starts inwards. The journey is inwards. The deeper I go within me, the more priceless my learnings will be. I know my heart is full of love. And I'm evolving into a person, into a human being with more love. So today, I take this beautiful intention of intertwining more love in me by being the channel of sending love every single day to people, things, and places. Simultaneously, I will keep practicing in my silent periods of time to discover the name of my higher self if I still haven't. I don't need a script. All I need is to ask myself, what is your name, dear higher self? And then wait to hear anything. Once I hear a name or two or three, I write them down. I again meditate in my quiet periods and see if there's a repetition. And once I see a pattern and a repetition, in the final 6th or 7th day, I can check with my higher self, is this your name? And then wait just to feel good. Similarly, we have also added in our beautiful meditation about closing our aura to all uninvited influences by telling them all that they're no more painful, they're not suffering, they don't need to get attached to us, that they are love and light, they were and they will always be. And we can request our higher self to show them the place to go to their home, namely the God's place. Then we can ask ourselves in our quiet periods to give a signal in our body of our connection with the higher self. Every time we address our higher self, immediately we can just ask for a signal to know that our higher self is guiding us, knowing that it'll come to us so easily, so spontaneously. Just when we ask, we know we are always being guided. It's very simple, just going inwards with a little effortless meditation, no effort required. The lighter you let your body be, the lesser movement you have in your body, the more connected you will be with your higher self. Just go with an intention that whatever unfolds for me is for my highest good. And so it is. Now let's each one of us pray our gratitude to our higher self. We can bow down our heads or fold our hands, whatever we are comfortable. To all the divine beings in and around us, we thank you for your guidance. To my higher self, whether I have found you right now or not, I know that I am because you are. This body is your extension. And to know your name is a beautiful gift to myself. So allow me the knowledge, the connection with you. And dear higher self, today I also requested you to show me a signal in my body to know that I am communicating with you. So allow me the knowledge. To all divine beings in and around me, I thank you once again from the bottom of my heart for making me evolve in this spiritual journey, for finding myself, my own journey. Expand the angel heart, your hands on your left and right of your heart level, open towards universe. Let's pray. I am love. I am light. I am bliss. I am joy. I am happiness. May I be the channel of blessings, of love, of light, of bliss, of joy, of happiness, all the time, always. Let's fold our hands in gratitude and be grateful for our life that we've lived and the lives that we've lived. To our higher self, for this beautiful communication. To divine beings once again, for the guidance. Now let's open our hands towards the universe
and tell our God, dear God, I am made in your image. So I am love. So I am light. I'm everything you are. Dear universe, thank you for including me in your Leela. I trust you. I know that you have my back in my inward journey, in my spiritual journey, where I find the Spirit's actual reality. I fold my hand once again in gratitude and bow my head. Now let's gently rub our hands, feel the energy flow, feel the warmth. And let's keep our hand very lightly on our head and thank our higher self. Thank our God. Keep on our face. Thank our perceiving elements, the 5 elements of earth, water, fire, air, space, of seeing, of hearing, of feeling, of speaking, of sensing, of smelling. Let's thank our neck for keeping us strong in our inward journey, for making us balance well, our shoulders, our arms, our back side of our body, upper to lower, our front side of the body, lower to upper. And finally, let's keep our hand on our heart. Think of that one person that you want to right now send love to and become a channel of spreading your love. Say I love you to the person, whoever you think you want to say. Give her or him blessings. And now open your hands and spread them on your palm, on your laps. And feel yourself being a divine channel of love, where your heart is expanding every moment in all directions of your being. And the love energy is spreading more and more and more and more and more. Feel your love becoming such a big circle of love that everything that touches it starts blooming. I am the center of love. I am the channel of love. And I am guided with my higher self, by my higher self. Staying in a body, my higher self is chosen. I am love. I am light. So it is. Let's fold our hands once more and be grateful. Let's bless each other, whoever is in this internal journey. Let's bless all sentient beings for finding their higher self, for realizing their spirituality, for going deep within and finding the hidden jewels. Love, light, blessings, and abundance to each one of us, to every being on Mother Earth, spiritual, human, living, mineral, animal, any kingdom, that all sentient beings be blessed. So it is. So I just want to share the first time when I had done this. So my left hand, the palm of my left hand, started moving in circles, like big circles, huge circles. And that was my signal from Kamal, my higher self, that whenever I ask for Kamal's guidance, protection, or any communication, this hand just starts moving. So you could have had any kind of movement. You've read about this, that it said that it could be a movement in your head, in your body. It could be an image that you see all of a sudden like a flash. It can be anything. All you have to do is be open and receptive. And this is, again, a very, very important week. So just understand that you have to keep practicing, practicing, practicing until that one signal is repeated every day. Then it's a confirmation that, it's the one. Very soon, we're going to be moving on. Every week will be a fast movement. So this book is fast weekly. But if you see daily, it's got step-by-step movement. So please do it every day. This is not like a regular book ki aaj miss kar diya ho gaya. It's okay, kal kar lunga. Unless not your aura and energy is so high that it's okay. Once or twice you've done and you're done. So you have to work on yourself. 6 months
And believe me, once you've done this book, you would need no counselor, no therapist, no classes, because you're just going to be so empowered. Of course, we are all learners, we are seekers, we will always keep wanting knowledge, and that's fine. But by large, you will not need anyone's guidance, because आपके answers आपके अंदर आएंगे yes or no. In fact, अभी तो आपको सिर्फ सिग्नल मिल रहा है आपके हायर सेल्फ का. बाद में सिग्नल मिलेगा कि yes मुझे ये करना है, कि नहीं मुझे ये नहीं करना, या मेरी बॉडी में अभी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस अगर हैं, उसका सिग्नल भी मिलेगा. So imagine your body will be a beautiful place where सब कुछ आना पता चल रहा है. और क्या मांग सकते हैं? And what are we spending? Just 20-30 minutes of our day going silent. That's all. So please commit to yourself. If हो सके तो अपना यूनिफाइड का आवर बना लीजिए, कि मैं इस समय प्रैक्टिस करूंगी, whatever. Okay, any questions? Any so far? Any sensations? So I saw the message which says, with saying one sentence, can we be able to close aura? Yes, Bhavika. That's why this book says, and that's what it happens. Okay, you had a sensation, Shivani. Keep working on the sensation. कि वो sensation आ रहा है, कल की कुछ और आ रहा है, कुछ और आ रहा है. You felt simmering in my entire body 3-4 times. Simmering तो है because आपका higher self connection है, अमित. But आपको एक particular sensation चाहिए to validate कि आपका higher self connection है. Your right hand is feeling very heavy, so observe it, Modita, कि बाद में भी आपका higher self heavy हो, right hand heavy हो रहा है क्या? आपको राइट सेंसेशन में चीक आया तो फील करो भाविका कि दोबारा भी उसी जगह आ रहा है, कहीं और आ रहा है. आपको लेफ्ट फिंगर में सेंसेशन आया, विच फिंगर? वी हैव 5, राइट? विच फिंगर? योर लेफ्ट palm got heavy, so observe them. You heard some noise in left ear, so yeah, okay, then see if that's repeating. So जो भी आपके आज पैटर्न्स आए, and when next time you go for meditation, don't go with this baggage कि मैंने ये फील किया, यही फील होना चाहिए. Just see कि क्या आ रहा है. And I will request you all to write down what you're feeling. So, कल ये आया था, Monday को ये आया था, Sunday को ये आया था, Tuesday को ये आया. Okay, ये repeat pattern है. And then ask your higher self कि okay, ये repeat pattern every day आया. Is this the one? अगर है तो show me. Is this right or wrong? बाद में yes no आएगा. But मेरा सिर्फ इतना बोलना है, don't take this session हल्का कि पार्क में बैठे हुए हैं, वॉक कर रहे हैं, और कर रहे हैं, कैमराज हिल रहा है, आप एडजस्ट कर रहे हो जैकेट्स. इसका मतलब यू हैव टू बी होम एंड डूइंग इट, या पार्क में क्वाइटलेस में. ये नहीं कि कोई आ रहा है, नमस्कार अग्रवाल साहब, हैप्पी संडे मॉर्निंग, और आप बोल रहे हैं हाँ जी नमस्ते. नो, 7 से 7:30 आप सेशन कर लो, उसके बाद आपको जाना है, आप चले जाओ. सो दिस इज अ 45-minute सेशन, एंड देन वी हैव सम रिफ्लेक्शंस. यस नेहा, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज. Good morning, Dee. Good morning. So, I had two sensations. Like the first one I got was from my right eye. A rectangle, a square popped up, and then again it zoomed in properly. And in that zoom in thing, I saw trees, branches of trees, and they having green leaves and all, and it was very calming for me. And I do connect with nature. So that was one thing which hit me. And the other thing was when you said that now ask your higher self to give you a signal. That time, all my focus went to my third eye. And it was pinpointedly giving me that only. So just concentrate on it. Okay. इस पे क्लियरली बोला था, कोई पिक्चर, लाइट का दिखना, कोई इमेज, कोई नाम, कोई सेंसेशन, कुछ फीलिंग, कुछ भी आ सकता है. अच्छा. कुछ भी. If you look at the book, page number 17, उसमें I'll just read this out again to all of you. So it says very categorically, wait for some signal that's obvious. It can be a movement of your head. आपका शायद head भी आपको लगे move कर रहा है, आपकी upper body move कर रही है, आपकी कोई finger या arm या leg move कर रहा है. It is important to be sitting so the entire body is free to move. खड़े होकर meditation नहीं होती, बैठ के करनी है तो आपकी पूरी बॉडी मूव कर सकती है. इट माइट बी अ मूवमेंट यू यूज्ड टू, जिसकी आपको आदत है, वो मूवमेंट हो सकती है. नहीं तो फ्लटरिंग आईलिड्स हो सकता है. इट कुड बी सेंसेशन सम प्लेस लाइक अ जेंटल कैरेस, और हीट हो सकता है किसी पार्ट में बॉडी के, टिंगलिंग हो सकती है. इट कुड बी अ विजन, आइदर अ क्लियर पिक्चर और सिंपली लाइट. तो आपकी जो आया नेहा, आपके लिए क्लियर एक इमेज आया. कई लोगों को सिर्फ लाइट का आभास होगा. इट कुड बी समथिंग दैट यू हियर. There are only two certainties कि जो भी आएगा आपको uncomfortable नहीं करेगा. It will be pleasant. And signal तब मिलेगा जब आप मांगोगे.
हर समय नहीं आएगा। जब आप बोलोगे कि आई वांट अ कनेक्शन विद माय हायर सेल्फ, इज दिस सिग्नल, तब वो सिग्नल आएगा। गेट दैट, प्रैक्टिस ऑन दिस वीक, go simply, go slowly, and let's discover. And just Good. another thing was that Huh. I'm feeling so fresh after that, Good. that in the morning session I was very sleepy, honestly, because I had a दिखा मैंने late तुमको night. आज, yeah. अभी मैं मतलब I am on my toes, मतलब I can just do things फटाफट से. I'm very तो fresh ऐसे ही right now. होता है जब अपने हायर सेल्फ से मिलते हैं, इट्स लाइक आपको अपने आप से मिल रहे हो आप, सो ऑफ कोर्स एनर्जी बहुत आएगी. सो गुड, ग्रेट ग्रेट. Thank you. यस पीना जी, प्लीज बोलें. वी कांट हियर यू. आपकी स्पीकर फोन से कनेक्शन नहीं है, क्या है पता नहीं, ट्राई करें. हाँ बोलिए. स्टार्टिंग में मुझे बहुत हैवीनेस लग रहा था हेड में स्टार्टिंग में. उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में मुझे ना एक डायमंड दिखा, और डायमंड की इतनी सारी प्रकाश थी कि वो टाइम पे मुझे बॉडी में एकदम वाइब्रेशन होने लगा ऑन द स्पॉट 1 सेकेंड. उसके बाद में वापस स्टॉप हो गया. थोड़ी देर के बाद में वापस बॉडी में वाइब्रेशन हुआ था. आई फील दैट मतलब इन दिस जर्नी. लेकिन कुछ नेम वगैरह मुझे कुछ नहीं आया था हायर सेल्फ का. प्रैक्टिस किया था पिछले हफ्ते 7 दिन? या फुल 7 डेज नहीं, 3-4 डेज आई थिंक. 3-4 डेज किया था मैंने सबको कहा था इस जर्नी में इट्स नॉट अ नॉर्मल जर्नी. यहाँ रोज करना है तो करना है, शॉर्टकट्स नहीं है. ओके. तो वो आपको करना पड़ेगा. नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर यू. ओके. करने के बाद भी हो सकता है नहीं आए, क्योंकि आप शायद एक उससे जा रहे हो कि अरे नाम क्या है, नाम क्या है, मतलब एंग्शियस एंजाइटी जा रही है. सो फ्री छोड़ दो अपने आप को. ओके. जितना लूज छोड़ोगे बॉडी को, माइंड को, उतनी जल्दी सिग्नल्स आएंगे, नाम आएंगे, कनेक्शन आएगा. ओके. Don't procrastinate, don't judge, don't think too much. वो एक्चुअली वो करती हूँ ना, तभी मुझे वही होता है कि मुझे नाम आएगा. मतलब आप जैसे बोले ऐसे कि भाई उसका ज्यादा वो बस मेडिटेशन है ना, बस उसको सुन के फ्लो करो, दैट्स इट. ओके. कोई क्लास तो है नहीं कि फर्स्ट आ रहा है कोई लास्ट आ रहा है, यार मुझे पहला नाम मिला आपको नहीं मिला, ऐसा थोड़ी ना है. सबकी अपनी जर्नी है. जस्ट गो विद इट, डोंट थिंक टू मच. ठीक है? ओके. यस मनीष. Ma'am, should we ask for the signal while reading the text every day, or should we repeat this meditation every कोई day? जरूरत ही नहीं है टेक्स्ट पढ़ने की. टेक्स्ट तो पढ़ना ही है, रोज हमें पढ़ना ही है 10 मिनट. बट मेडिटेट करते वक्त आपने जिस समझ लिया वो जिस्ट आप अपने वर्ड्स में डाल दो. सिंपल चीजें हैं. 3 चीजें हमने सीखी हैं. एक, हमने गॉड की सारी क्वालिटीज उसको अपने साथ इम्बाइब किया है. हर रात को हम उनको एक वर्च्यू को समझते हैं कि अरे आज लव है, लव को एक्सपैंड कर रहे हैं. ब्लिस है, ब्लिस को एक्सपैंड कर रहे हैं. वो हमने फर्स्ट हफ्ते किया. सेकंड हफ्ते हमने अपने हायर सेल्फ से उसका नाम पूछा. आस्किंग कि आपका नाम क्या है. तो हमको विस्पर की तरह कहीं ना कहीं जैसे आपको हरी नाम आया है, सो दैट्स योर हायर सेल्फ नेम. थर्ड हफ्ते जो इस हम करने वाले हैं, हम उन दोनों क्वालिटीज को इम्बाइब करेंगे. प्लस हम समझेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर हमारा जैसे हायर सेल्फ है, ऐसे कई बार जब चिड़चिड़े होते हैं, मूडी होते हैं, बीमार होते हैं, एंग्री होते हैं, हमारा ऑरा टूट जाता है. तो अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं, जो पीपल हु डाइड, हु क्रॉस्ड ओवर, उनकी आत्मा हमारे अंदर, उसका इन्फ्लुएंस आता है. आत्मा अंदर नहीं आ जाती, इन्फ्लुएंस आता है. तो हमको उसको खत्म करना है. उसके लिए उनको बोलना है कि आप, जैसे मैं लव एंड लाइट हूँ, आप भी लव एंड लाइट थे, हो और रहोगे. अब आपको दर्द भी नहीं है, आप होल हो गए हो, हील हो गए हो. देयर इज नो पेन and there is no need for you to attach yourself to a physical body, either mine or anybody else's. So you have a home to go to. भगवान में घर है आपके पास जाने के लिए. Please go there. अगर आपको रास्ता नहीं पता तो my higher self, which is an atma, will show you the रास्ता. And you pray them, wish them well. तो ये तो आपने भेजा uninvited influences को. फिर आपने अपना ऑरा लॉक कर दिया. पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो कि I close my aura from all uninvited influences except my higher self. और इसके बाद, ये 2 चीजें करने के बाद, आप अपने हायर सेल्फ से पूछते हो कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं कि नहीं, मुझे एक सिग्नल चाहिए. और सिग्नल मनीष हमेशा सब लोग के लिए सिग्नल एक ही होगा, मल्टीपल सिग्नल्स नहीं होंगे. सो ऑब्जर्व दैट सिग्नल की हर हफ्ते
हर दिन वो सिग्नल आ रहा है कि कोई और आ रहा है। कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है शुरू में कि वो ये हो रहा है, ये हो रहा है, कल ये हुआ, आज ये हुआ, बिकॉज हम बहुत एप्रीहेंसिव हो रहे हैं। सो नो एप्रीहेंशन, जस्ट फ्लो विद इट, लेट योर बॉडी लूज, एंड सेम सिग्नल दोबारा 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 आएगा। अब तो मेरी आंखें खुली होती तो भी मैं हैंड, इफ आई जस्ट आस्क ना कि कमल आर यू देयर विद मी, मुझे गाइडेंस चाहिए, अपने आप इट टिंगल इमीडिएटली। कई कई बार व्हाट ऑफ एनर्जी इतनी ज्यादा है, मैं ओके स्टॉप, इट स्टॉप्स, बस कंफर्मेशन मिल जाती है। सो इट विल बिकम सेकंड नेचर टू यू लेटर। अभी प्रैक्टिस करना है टू रीच दैट वन सिग्नल। ओके, ग्रेट मनीष, थैंक यू। Ma'am, just a thought. The higher self has always been there, no? Always. And it has been guiding us throughout our life. It's just that now we are consciously trying to make ourselves aware of it. गाइड कर रहा है हमेशा, पर आपने सुनी है कि नहीं वो आप डिपेंड करे ना। आपने सबकॉन्शियस माइंड या हायर सेल्फ की बात सुनी है कि आपने अपने एनालिटिकल माइंड की बात सुनी है? दो पार्ट्स है ना, बॉडी के साथ एक कॉन्शियस माइंड आता है और हायर सेल्फ के साथ सबकॉन्शियस माइंड आता है। किसकी बात सुनी है आपने, वो आप पे डिपेंड करता है। आप शुरू से गट फीलिंग पे जा रहे हो, इंट्यूशन पे जा रहे हो, कि आप अपने एनालिसिस पे जा रहे हो। अब आपको जब मालूम पड़ जाएगा कि माय हायर सेल्फ कैन नेवर गो रॉन्ग, सब चीजें राइट होंगी लाइफ में। हम उस बात पे जा रहे हैं, अब यूनाइटिंग आवरसेल्व्स विद द हायर सेल्फ। बहुत ब्यूटीफुल बुक है, यू हैव नो आइडिया, बट आई होप आप सबने बुक प्रिंट आउट करवा ली है। गो टू योर लोकल प्रिंटर, गेट अ बुक प्रिंटेड, चाहे आप इसको वायरो बाइंडिंग कराओ, चाहे परफेक्ट बाइंडिंग कराओ, एनी प्रिंटर विल डू इट, एनी प्रिंटर। बुक साथ में होना इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है, नोट्स लिखना इंपॉर्टेंट है। मेरी तो इस बुक में कितने हाईलाइट्स हैं, कितने नोट्स हैं, आई कांट टेल यू हाउ मेनी नोट्स आई हैव। सो प्लीज डू दैट फेवर, बुक इज इंपॉर्टेंट। यस सान्या or Kamakshi, whoever. Hi, Prachi. Yeah. Good morning. First week, I got the name Naman, but I could not practice it. Second week, when you repeated it, like first week was that, second week and third week was similar. I got the name Shanti, and it then I repeated it for a whole week. That same name come. And now the feeling was overwhelming. मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब I felt like somebody is giving me a very warm hug and बहुत ही ज़्यादा love, and then my upper body starts shaking. ऐसे feel होता है कि मतलब I don't feel like I have no words to tell. मतलब words होने भी नहीं चाहिए। Finally you're coming home. Finally तो मिल रही हो, अब तो मिल रही हो। मतलब वो लगता है कि इस जर्नी को ना शेयर ही नहीं करा जाता, मतलब बहुत, बिकॉज व्हेनेवर यू स्टार्ट विद द मेडिटेशन तो वाइब्रेशंस तो आती हैं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी और इसका लव बहुत डिफरेंट था। और जब फीलिंग, जब हायर सेल से आश किया तो लेफ्ट हैंड फ्लिकर और वो, लेकिन द अमाउंट ऑफ लव आई गॉट वाज इमेंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, गॉड ब्लेस यू। यस उषा जी। हाँ जी बोले। हाँ, थैंक यू प्राची। मेरे को जो लास्ट टाइम फीलिंग हुई थी, सेम ही फीलिंग हुई, मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट। लास्ट संडे भी, मतलब सेशन के बाद भी मैं बहुत टाइम तक, मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे चारों तरफ कोई वेव चल रही है। मतलब जो जैसे अभी इन्होंने बोला सेम है कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ वर्ड्स में कि मैं क्या फील करती हूँ। और आज एक चीज और हुई कि मेरे दोनों हाथ, मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे हैंड बिल्कुल लाइट है एकदम से, जैसे मतलब बहुत ही लाइट वेट है। मैं सारा मेडिटेशन करते वक्त मेरे को लग रहा था कि मेरी बॉडी बहुत लाइट हो रही है एकदम से। नहीं, बट दैट्स ग्रेट, दैट्स ब्यूटीफुल, बट एक सेंसेशन आना जरूरी है जो आपको सेंसेशन पूरी बॉडी में जैसे एक वाइब्रेशन आती है ना। नहीं, वो दैट्स नॉट द सिग्नल। एक बार देख के देखो, मतलब इट कुड बी। आज तो ये आया कि मेरे दोनों हैंड्स एकदम यहाँ से यहाँ तक एकदम लाइट हो रहे हैं। दैट कैन बी अ सेंसेशन। दैट कैन बी अ सेंसेशन। पूरी बॉडी में तो वाइब्रेशन आना, इवन दैट कैन बी, बट यूजुअली एक कुछ पर्टिकुलर चीज होती है
हाँ तो वो अगर आपकी पूरी बॉडी में हो रहा है, इट्स नॉट लाइक कि वो रॉन्ग है, बट वर्क ऑन इट मोर कि वो सेम चीज बार बार आ रही है कि नहीं. कई बार हमारा प्री कंडीशनिंग माइंड की वजह से भी होता है, बट इट्स ओके. अगर हो रहा है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, आस्क कर लीजिए कि इज दिस सेंसेशन. अच्छा, पर आज ये डिफरेंट हुआ कि जैसे मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे दोनों हाथ बिल्कुल लाइट हो गए हैं. तो कल भी वापस करिए, परसों भी करिए, शाम को मानो शाम को भी कर लीजिए. इट्स नॉट लाइक कि दिन में एक ही बार करना, दिन में एक बार मिनिमम करना है. अच्छा, बहुत सारे फिगर्स आ रहे थे और आई वांट टू नो कि हु इज माय मतलब हायर सेल्फ. तो व्हाट इज दिस? कुछ भी नहीं है. ओके. जस्ट कीप इम्बाइबिंग. जैसे मैंने आपको बताया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम पूछा था तो मुझे नाम कमल आया, एंड नेक्स्ट मेडिटेशन में मुझे पूरी वो ड्राइंग डाउनलोड हो गई कि क्या है, हाउ कमल एंड आई एम इंटरट्वाइंड. उसमें 11 चक्रास भी आ गए, एनर्जी पॉइंट्स की, जो मैंने आप लोग को बुक दी थी ना अभिव्यक्ति. सो इट इज नॉट लाइक कि जरूरी है इमेज आना. आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए. अच्छा, दोनों लास्ट संडे भी और आज भी बिल्कुल एक सेकंड के लिए, जैसे माउंटेन आता है ना, माउंटेन उसके ऊपर कोई व्हाइट टिप, ये लास्ट संडे भी आया था और आज भी, पर बहुत ही मोमेंटरी आया था कि आया और गया. You just meditate. It's too soon to. बहुत कुछ आ रहा है आपके, mountain, light, sensation, lightness here, people, images. So you have to come to one thing. One thing. Okay. हमारा mind जो है ना, हर जगह helter skelter energy. तो बहुत कुछ आता है, but meditation is not about बहुत कुछ. Meditation is about nothing. Yeah. Okay. तो अभी आपकी energy is all over the place. धीरे-धीरे कम हो जाएगी. Let it be in one place. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Anu, I prefer to speak when the cameras are on because I like your energy. Yes. Sure. Tell me. So what I wanted to ask was, I got cut off a little bit, so I don't know if you addressed this, Prachi, but when I was looking for the sensation or open to the sensation, my fingers just went to the mudra, like, you know, the chin mudra thing. Right, right. So is that okay? Or should I feel like some sensation in particular? So what happens with this is that if you're like, you know, it could be that you're moving the fingers and there's something where you feel a current in your fingers and them coming together. So what is it that you're feeling? Is it the current flowing in the fingers automatically coming, or consciously we're doing it? So why we wait for a sensation is that we can't make the sensation come. So say right now, if I say, let my left hand tingle, it can't come, right? But if I say, let my left hand move and become a lotus, it can't move. So making a physical gesture is most likely at times humanly made. Okay. So give us some sensation which we can't make. We can't conjure it up. Wait for that signal. Okay. So I'll wait. Also could be because we've done so much of meditation. So we just feel, oh, this is a moment for us to be enlightened. So, and it will not be both the hands. It will be one little sensation of something. So observe. I guess I have to wait. Yeah. And let's be beautifully patient. It's a very beautiful journey. So let's just embrace it with like being open. That's about it. It'll come. All right. Lots Thank you. Thank you, Maria. Yes, Neha, you have a question again? Yeah, hi. So I just wanted to ask you whether when you said that I closed the aura except my higher self, when you said that, that image propped up. So can that be linked with my higher self or my purpose? That of course. The landscape and all. Yeah, of course. Purpose की बात नहीं हुई. No, Neha, confuse मत करो. This is not about purpose. अभी purpose का chapter पे नहीं आया. Higher self. अभी हम जिसकी बात करें उस पे रहें. Purpose का भी आएगा chapter. Let's not jump the gun. Okay. So higher self. So मेरा बिंदु आया तो it got focused बराबर से 2 बार focus हुआ. खुद मालूम पड़ जाएगा. खुद मालूम. हाँ. नहीं, पर मतलब वो इमेज जो थी वो मेरे हायर सेल्फ से रिलेट कर सकती हूँ ना मैं कुछ भी कर सकते हो नेहा. You have to feel happy for it. I was very happy with it. And I generally feel happy when I'm connected to nature. So now I always find you very stuck. Sorry to say that. You're too stuck in your thoughts. What you like is not what this chapter is all about. But human, wait. The human aspect of you is liking nature,
is loving that, is wanting a purpose. Don't mistake that with your higher self. They're not the same, my dear. Your human nature is because society also. Conditioning की वजह से भी change हुआ है, right? Yeah. We are trying to go back to love and light. The two elements that we are born with. Become an open vessel. सारी conditioning को बाहर निकाल दो. Become light in your energy. Don't think so much. It's spiritual journey. It's not a academic book, which, I say that what I'm saying is right. No, what you're saying is also right. I'm trying to say what relevance attach mat karo. Yes, got it. Go with it. Yeah. So, all right, requesting everyone Thank you. Do your chapter this week again. And those of you who haven't done the previous, take your time and do it. Parallel, you can do it if you have time. And I wish you all the very best. May you all meet your higher self. May you all have the sensation that you're waiting for. Lots of love and lots of light, lots of abundance. Take care. Be blessed. Thank you. Thank you. Thank you.